Hello, good morning everyone. Today is 13th of January 2024. मैं बैठा हूँ अपने लाइब्रेरी में, सामने खोल दिया हूँ अपना फ्रेंच डोर. सो बाहर का साउंड आ सकता है, काइंडली डोंट माइंड दैट वन. सो इन दिस वीडियो हम लोग जो करने जा रहे हैं दैट इज लुकिंग एट द बैंकिंग स्टॉक्स इन द इंडियन मार्केट. कोई भी इकोनॉमी में ना बैंकिंग स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी मेजर फ्रैक्चर जो है बैंक्स के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं. सो बैंकिंग स्टॉक्स को एक बार ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है मेरे हिसाब से. ये काइंडली हम लोग वीडियो जिनको इंटरेस्ट आ रहा है इन द बैंकिंग स्टॉक्स यू कैन हैव अ लुक. वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स हैं, 38 स्टॉक्स ब्रॉडली, बट विद द रेनबो सेटअप फाउंटेन ऑफ गोल्ड हमको बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा 38 स्टॉक्स को एनालाइज करने में. तो चलिए एक बार स्क्रीन शेयरिंग चालू कर देते हैं. We have started screen sharing. Now we are going to indicators. Indicators में invite only script, उसमें SD Rainbow Wave version 1. और हम जो करने जा रहे हैं वो that is stocks. तो स्टॉक्स जो भी ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. व्हाट यू आर गोइंग टू बाय और व्हाट यू आर गोइंग टू सेल. तो पहले डिसाइड करना होगा कि कौन सा स्टॉक्स मेरे लिए सूटेबल है फॉर द नेक्स्ट वीक या फिर मेरे लिस्ट में रहने के लिए. तो उसके लिए स्टॉक का सिलेक्शन मींस व्हाट टू बाय का रिस्क मैनेजमेंट हम लोग पहले करेंगे. और वो वीकली चार्ट में मेरा जो सिस्टम है उसमें मैं वीकली डेली कॉम्बिनेशन करता हूँ. कुछ कुछ स्टूडेंट्स है जो लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, उसका मेथड इज डिफरेंट. टू गो इन द लोअर टाइम फ्रेम चार्ट से यू वांट टू बी अ swing player in 75 minutes, then your method will be a little different. Kindly join the class to know that, or maybe we can cover it in the Rainbow Learn to Use series. तो अभी जो कर रहे हैं वो है हम लोग आ जाएंगे स्टॉक्स, वीकली सिलेक्ट करेंगे और उसमें अप्लाई करेंगे और चार्ट को बनाएंगे वीकली चार्ट. साथ में SDRSI जो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है. चार्ट को ऑटो मोड में सेट करेंगे. ऑटो फिट डेटा कभी कभी एडजस्ट करने से दोबारा चार्ट को करना पड़ सकता है काफी. नाउ हम लोग AU बैंक को देखेंगे पहले. AU बैंक, तो जैसे ही हम लोग सेटअप में आए तो यहाँ पे मेरा जो रिक्वायरमेंट है तो एक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रहने के लिए इट हैज टू, या फिर लिस्ट में रहने के लिए इट हैज टू सेटिस्फाई सम क्राइटेरिया. उस क्राइटेरिया में ये है कि ये जो ऊपर रीडिंग्स दिख रहे हैं मीट प्री TMP बुलिश, TMP1 और TMP2, इनमें से मिनिमम एक क्राइटेरिया फुलफिल करेगा. बेस्ट रन मिलता है जब स्टॉक रिमेन्स इन द TMP2 फेज. नेक्स्ट इज वंस मिनिमम वन, then we want stock strength score, RS status and speed score. Strength score we want 70 in weekly. We want RS status to be either rising bull or speeding bull or extreme bull, or stock speed score above 10. ये रहे हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया. अब और एक प्रेफर्ड क्राइटेरिया कि यहाँ पे ये ग्रीन दिखे. अगर ग्रीन नहीं दिख रहा है तो मिनिमम कोई एक्सपेंशन दिखे. तो चलिए इस बार स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. इट्स वी आर स्टार्टिंग. देखेंगे कितना टाइम लगता है AU इसको जरिए मैनुअल स्कैन करने में. 38 स्टॉक्स आर देयर. वी आर स्टार्टिंग नाउ. AU बैंक, वी कैन क्लियरली सी दिस स्टॉक इज रिजेक्टेड. We don't do anything except for adding an alert that AU Bank SD Rainbow Wave version 1 stock strength score above 17 weekly chart. Then we are coming to Axis Bank. Axis Bank, after red caps, full green candle is the point of entry points. But look at the volume. The big players are not there. And we need a strength score above 70. So strength score 70 is done.
Then we have Bandhan Bank. I'm waiting for a breakout. Still have not got it. Big players are there waiting for the stock strength score and the TMP criteria. So Alt A, strength score greater than 70. Then we have CSB Bank. CSB Bank is satisfying our criteria. Though it is in a red cap means it's in a correction. Preferred criteria means green नहीं है. So that is why इस यहाँ पे से जो buying था उसमें big players का participation नहीं है. We are seeing a correction. This stock when we want to buy, ST Momo minimum bullish. So Alt A, ST Momo bullish or price action bullish. Price action bullish alert number 2.1, which basically means a full green candle. Abhi candle full green nahi hai. Next we have City Union Bank. City Union Bank is not even satisfying our criteria. We will add strength score greater than 70 and we are done. Then we have DCB Bank. DCB Bank is beautifully satisfying our जब से buy signal था रेनबो में वहां से ब्यूटिफुल अपसाइड मूव आया है. आई थिंक इट हैज पोटेंशियल फर्दर. सो डीसीबी बैंक विल रिमेन इन आवर स्टॉक लिस्ट. आई विल मेक इट ऑरेंज. देन वी हैव धनलक्ष्मी बैंक. धनलक्ष्मी बैंक में भी ब्यूटिफुल मूव हुआ है. वेरी बिग मूव, ब्रेकआउट. This stock is satisfying our criteria, but alpha is too high, means high volatility. Big players participation can be seen. And this is a clear breakout in Dhanalakshmi Bank. So this one will remain in our focus. For the next level of alert डालने के लिए जो daily chart में डाला जाएगा क्योंकि daily is my execution time frame. Then we have Equitas Bank. It is satisfying the criteria, so it is selected. Then it is the Federal Bank. It is not satisfying the criteria, rejected. You can place alerts if you want. Let's place alert. Alt A, stock strength score greater than 70. अब जा रहे फिनो पीवी बैंक. बहुत टाइम बाद एक ब्यूटीफुल बाई सिग्नल. तो ये बाई सिग्नल जो आ रहा है देखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया से आ रहा है फिनो पेमेंट्स बैंक. तो इस जगह पे जो फीलिंग आता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का फीलिंग आता है. लास्ट वीक इसने बाई सिग्नल दिया है, ये रहा 8 जून को. सो ये बाई सिग्नल वैलिडेटेड है, मतलब पूरा वीक स्टे किया है. अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक स्ट्रेंथ स्कोर, आरएस स्टेटस, स्पीड स्कोर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. So in this case, when we know that stop loss is too tight, it's a good comeback, it has potential, there is a buy signal, we can skip these because rainbow minimum buy criteria is a full green candle and no red background. So it is satisfying some of the PMP criteria. But यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि छोटा क्वांटिटी लेते हैं and we wait for the strength score to turn into 70. RS into every alert change pay we can add quantity. So Fino Payments Bank should be in my focus and I will add 3 alerts in them for all 3. One is last alert number 6.1, stock strength score greater than 70. Then we place alert number stock 6.2, stock strength score and rising. Then we place another alert that is stock speed score greater than 10. Then we want another alert, stock RS status, relative strength rising, alert number 6.6. So all 3 different alerts are placed in Fino Payments Bank. Then we have HDFC Bank. HDFC Bank को इसको थोड़ा change करना पड़ेगा. This is an old one I'm using. तो ये latest model use करने के लिए invite only RSI X, apply. So here we can see a bit of turnaround, a comeback in the HDFC. Could not break higher, but HDFC was moving good.
we were discussed going long a bit in HDFC, similar to Fino Payments Bank की satisfy नहीं किया था, but some quantity we can try it out and it was a good comeback. तो ठीक है, अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ. It's a big green candle. Bulls are not done, but this is an important correction. So how to add further quantity to, first of all हम लोग इसका wait करेंगे. So strength score to do major quantity. And we will place several alerts. First of all, strength score greater than 70, और उसके साथ साथ we want a price action bullish, means a full green candle, जो minimum criteria है एक fresh buy position डालने के लिए. Currently candle a mix of green and red. Next हम लोग जा रहे हैं ICICI बैंक में. आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, आईसीआईसीआई बैंक एक करेक्शन पे आ रहा है. आफ्टर रेड कैप्स के बाद एक फुल ग्रीन कैंडल होता है, पॉइंट ऑफ एंट्री, बट इसमें स्कोर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो विल स्टे अवे अ बिट. जिसको छोटा क्वांटिटी डालना है दे कैन डू इट, बट फॉर बिगर क्वांटिटी विल वेट फॉर स्ट्रेंथ स्कोर टू ग्रेटर देन 70. नाउ दी स्पेशलाइज्ड अलर्ट्स आर लिमिटेड. ट्रेडिंग व्यू अलाउज 400 of them, so only placing one alert for the stock is fine. That is the strength score 70, which is a minimum requirement criteria. Next, ये stock भी देखिए, ये भी satisfy नहीं कर रहा है. We can just place an alert, strength score greater than 70. Then we have IndusInd Bank. IndusInd Bank is going up. It is beautifully, जब से बाई सिग्नल आया है, that is why छोटा क्वांटिटी हम लोग कोशिश करते हैं. जब से ब्रेकआउट it has given almost 40-50, बट अभी देखिए ये वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है, एसडी वॉल्यूम, ये स्क्वीज हो रहा है. मतलब बिग प्लेयर्स हैव गॉन आउट ऑफ दिस. we'll have to be careful. You can see some correction when there are squeezes, बट ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता. इट कैन स्टिल गो अप, एंड बिकॉज इट स्ट्रांगली, आपको एग्जिट करने के लिए यू शुड लुक एट एसटी मोमो bearish in the daily platform. It is selected in mine as our criteria, and it is, we have added it. This one also satisfying our criteria, minimum 70 के ऊपर. This one is not satisfying our criteria. Fading bull alert नहीं, हमें चाहिए rising bull या extreme bull. तो relative strength rising का alert डाल दिया, and we are done. Then we have Karur Vysya Bank. Look at this correction that is going on big. It, since the move, जब से 126 का breakout, what a run it has given up. 30% up Karur Vysya Bank since the buy signal. ये वीकली बाई सिग्नल बहुत ही प्यारा एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर वो बैकग्राउंड ग्रीन के साथ आ रहा है. जैसे ये रेड में देखिए, बिना बैकग्राउंड रेड का है, जब बिना बैकग्राउंड रेड हुआ तब सिग्नल नहीं आया. दोनों एक साइड ब्यूटीफुली कोइंसाइड किए इसमें, और ब्यूटीफुल रन मिला है इन करूर वैसा बैंक. बट करंटली फेडिंग बुल मोड में हम लोग यूजुअली प्रॉफिट बुक करते हैं. तो इसमें नाउ अलर्ट चाहिए राइजिंग बुल, तभी जाके कोई फ्रेश पोजीशन हम लोग सोचेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ राइजिंग. अलर्ट नंबर 6.6. कोटक बैंक नॉट रेडी, अभी के लिए अलर्ट नहीं डाल रहे हैं. कितना अलर्ट फालतू में खर्चा करेंगे. ब्यूटीफुल ब्रेक आया है कर्नाटका बैंक में 7.5%, बट अभी भी बढ़ सकता है. बिग प्लेयर्स आर देयर, सो इट इज सेटिस्फाइंग आवर क्राइटेरिया सिलेक्टेड फॉर आवर वीकली लिस्ट. This one is also satisfying our criteria. RBL बैंक, रेड कैप्स के बाद ग्रीन कैंडल, फिर से एंट्री का अपॉर्चुनिटी था, but unfortunately big players are going away from this stock, and it has a very high beta, so high volatility मतलब छोटा stop loss इसमें काम नहीं करने वाले हैं. So we'll have to be careful into this stock, but it is anyway selected, so we'll next for the next level of alerts in daily. फिर हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट, वी आर कमिंग टू साउथ बैंक. साउथ बैंक में ये एक्सपेंशन था, बट साथ में ग्रीन नहीं है, ये स्ट्रगल कर रहा है. इट हैज गॉन अप, इट इज फेडिंग बुल मोड में. सो वी वांट अ राइजिंग बुल, एंड वी वांट अ स्टॉक स्पीड स्कोर ग्रेटर देन 10. तो स्पीड स्कोर का अलर्ट डाल दिया.
Then we have Suryodaya Small Finance Bank. It is also another one that is selected with a strong comeback. It is satisfying our criteria. It is further up opportunity रह सकता है with stop loss इसके नीचे देखना नहीं चाहिए about 160 के आसपास, and major break level is 184 जो next week break होके we can see some solid move here first towards this level 200 and then possibly towards 278. This is a weekly signal that I'll take note of. Suryodaya small fine, it is selected. Then we have TMB, this Tamil Nadu Marka Bank. It is in a bearish mode. So except we are already placed the buy signal alerts, that is the rainbow buy, and we have nothing to do with this stock. Then Ujjivan Small Finance Bank. It is another attempt of a comeback, but it's not ready. We'll place the speed score alert. Ye raha, Alt A. Alert number 6.91, speed score greater than 10. Then we have Yes Bank. ये बहुत ही बढ़िया move किया है जब से we have bought it. It is showing volatility. It will continue to show volatility. आप इसको डेली चार्ट के हिसाब से खेल नहीं पाओगे, ये हम लोग डिस्कस किए थे. ऐसे volatility exit signal आएंगे. So once we have entered in the weekly, we have discussed entering since 19.5, 19. So we are in a good move. It's a well protected, and I have entered into. I know this stock is not fundamental, it may not be good, but after a very long time there was a buy signal in the monthly chart, which is I give importance to, and it reaches very likely to reach the 37 area, or could be a little higher 45. So it was a very risk reward opportunity. हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, so no point repeating that. फिर हम लोग जा रहे हैं PSU बैंक स्टॉक्स में. ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हम लोग शुरू किए हैं 13 मिनट में इतने सारे स्टॉक्स में काम भी हो गया कि क्या करना है हम लोग क्लियरली समझ भी गए. That is the beautiful power of Rainbow. So it is the speeding bull. Its stock is satisfying our criteria. Currently, there is a red cap, so it is not ready. We'll place the necessary alerts. So next level of alert के लिए this stock is selected. नेक्स्ट लेवल ऑफ अलर्ट का एग्जांपल दिखा रहा हूं जो यूजुअली जिसका वीडियो नहीं रहता है. सो अब डेली चार्ट में सिमिलर काइंड ऑफ स्क्रूटिनी हम लोग करेंगे. देखिए रेडी नहीं है तो इसमें तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे. तो इसमें चाहिए मिनिमम प्राइस एक्शन बुलिश, और ये जो स्ट्रेंथ स्कोर ये सब न्यू एटलीस्ट इन द येलो जोन, नॉट इन द रेड. सो इट इज इन द रेड राइट नाउ. अभी ये रेड में है, तो इसमें जो अलर्ट डालना है दैट इज द शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश हो जाए, और साथ में ये हम लोग स्ट्रेंथ स्कोर का डाल सकते हैं, बट एटलीस्ट प्राइस एक्शन बुलिश और शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश हो जाए, वी कैन थिंक अबाउट एंटरिंग. तो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी में ये एग्जिट हो जाएगा फ्रॉम द बैंक ऑफ बड़ौदा. नेक्स्ट जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं इन द वीकली चार्ट, ये एक ब्रेकआउट आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया में. Bank of India has gone up to 129. It is given a good move. It is significantly going up. It's all only problem here is Bank of India is the fading bull. But since all the other criterias are fulfilling, a little bit of fading bull is okay. That means it's not moving, doing as good as the index, but nonetheless, it's a beautiful breakout. Maybe later part, it will start outperforming the index. So Bank of India will remain in our list. Next is Canara Bank. Canara Bank में आते हैं. कनाडा बैंक में ब्यूटीफुल हम लोग बहुत टाइम से बाई में बैठे हैं. We have discussed this from the, if you go back to the earlier bank videos, उसमें दिखेगा जब बाकी बैंक्स रेडी नहीं थे, कनाडा बैंक was ready and it is going up. It is very likely, but big players are no longer participating. Fading bull आ चुका है. So maybe कनाडा बैंक से थोड़ा पैसा हटा के दूसरा जगह सोचना चाहिए. कनाडा बैंक is so far not selected.
will place the rising bull alert. That is the relative strength rising alert number 6.6. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आफ्टर रेड a full green candle buy signal, we need a strong breakout. There is some fading bull is there, but big player participation is visible. So Bank of Central Bank will be another stock from the banking side that will remain in the portfolio. Then we have Indian Bank. Indian Bank is not ready. Bhale we are, this breakout attempt did not work. You can see it after that a full raid. Maybe it is waiting for the earnings report, but at least for now it's not ready. So we'll place the ST Momo bullish alert or speed score alert. Rather put speed score alert greater than. कोई एक ही alert use कीजिए, enough है. फिर हम लोग देख रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक. Indian Overseas Bank looking more of a flattish, fading bull, speed nahi hai, so we'll wait for a breakout of 47 area, then we'll think about IOB. So यहाँ पे प्लेस कर देते हैं Alt A क्रॉसिंग अप. इसमें रेनबो से नहीं सिलेक्ट करना है, रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स क्रॉसिंग अप, वैल्यू डाल के क्रिएट. Then we have Bank of Maharashtra. We got a buy signal. Unfortunately, RS status is not ready. So I already placed an alert into this. This one. Relative strength rising. I'll place once again if I have not, maybe I missed it or anything. So Punjab National Bank is in a fading bull mode. It is now probably could be a time a little 100 ko cross nahi kar pa raha. There is a struggle. We may wait for the cross of the 100 and then we'll think. PNB crossing up. So 101 के ऊपर जब चलने लगेगा, then we'll think about it. PSB, Punjab and Sindh Bank, unless there is a breakout of this area, we are not going to think about this one. So Alt A crossing up, create. SB, State Bank of India, as per our, this stock is not selected, will place strength score 70 alert and will be gone. Next one is UCO Bank. यहाँ पे बाई सिग्नल तो आया है. देयर इज अ बाई सिग्नल. देखिए ऑलरेडी अलर्ट मेरा लगा हुआ है ब्रेकआउट का, बट डिस्पाइट द बाई सिग्नल वी डोंट हैव द मोमेंटम. सो आइदर ये ब्रेकआउट का अलर्ट प्लेस और यू कैन प्लेस अलर्ट नंबर 3.1 और शॉर्ट मोमेंटम बुलिश. देन वी हैव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. थोड़ा एडजस्ट करना होगा चार्ट को भी. आफ्टर रेड कैप्स अ फ्रेश ब्रेकआउट. This stock, except the big players participation is now less, so it is at least selected for the second round of scrutiny. So now we have in our list orange list. देखिए ये सारे बैंक सिलेक्टेड हुआ और ये एनालिसिस करने में मुझे एग्जैक्ट टाइम लगा 20 मिनट्स और धीरे धीरे किया हूं क्योंकि आप लोगों को समझाना पड़ा. इफ आई मूव फास्ट I can do it within 10 minutes. So with that's the power of Rainbow. You can clearly select which stocks easily which should be in our portfolio or not. Next, once these stocks are selected, we come down to the daily chart and we select the stocks less than week option. Let's adjust it. So it's basically now we'll go through the daily chart. DCB is already selected rising bull. So only the big players participation is not there, but still we can keep it. Let's see. Because big players are not always everywhere. Dhanalakshmi Bank, suddenly a spark of green. It has a big move. So you either want to wait for a correction or you want to place
small quantity, and then gradually see what's happening further. So that's should be the strategy in Dhanalakshmi Bank. Let's look at Equitas. Minimum is yellow, so it is yellow is there, so we don't want red. It is selected, but from the break area it has already moved, so we'll have to wait for further break. But now the volume is also squeezed in Equitas. So Equitas we can move away from. Then we have IndusInd Bank. IndusInd, nice beautiful rise after the another round of break. Except for the big players participation, IndusInd is broadly fine. It is satisfying the criterias. It is broadly stock strength score to speed score. It is in the yellow, तो ये बुरा नहीं है. We don't want red, so at least ये रह सकता है to see further scrutiny में. So Karnataka Bank is giving a breakout. This one we have discussed is a very good position in the weekly chart. Then we have RBL Bank. This is also attempting a breakout, but this one is stock RS status is bearish. So now we'll place an alert in daily chart now. Stock relative strength rising, and remove the RBL Bank from the list. Then we have Suryodaya Small Finance Bank. Look at the move. This one is also remain in the portfolio direct for the direct scrutiny. This one is lacking the volume. Bank of Baroda not ready. So we can simply place stock strength score greater than 70 alert and be gone. Remove Bank of Baroda. Then we have Bank of India. Presence of big players, big breakout. This one stays. Then we have Central Bank of India, not a great breakout. We need a strong, we'll place an alert of 52, means all-time high break. Then we'll think about what to do with this one and remove. Then we have Union Bank of India. There is another expansion, a break, fresh break. They are on yellow or green, no red. So this one is good with a buy trade win probability around 93%. So these are the 1, 2, 3. These are the banks that are now selected under direct scrutiny: DCB, Dhanalakshmi, IndusInd Bank, Karnataka Bank, Suryodaya Small Finance, Bank of India, and Union Bank. Total time laga 24 minutes. So I hope you all enjoyed this stock discussion with me, how to look at different sectors. If it's helping you, don't forget to like and subscribe to my channel. All the best and happy trading.